Jamuna Tira Jamuna Tira Vanantari Jaya Radha Madhva Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Girivardhari Jaya Gopi Jana Girivardhari Jasodhanandana Narandana Jasodhanandana Brajadana Jamuna Vanantari Jaya Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bolo. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe. Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaura Premanande, Jayam Vishupad Paramahamsa, Pri Vrajakachaja Stotra Satta Sri Simar, His Divine Grace, Shirabai Charanarvan Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, ISKCON DBT, Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Samavata Bhakti Vrinda Ki, Harinam Sankirtan Ki, Grantaraj Bhagavatam Ki, Jai Nitai Gaura Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuranmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuktale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Agrajatam Sahadana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadukam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Lalita Shri Visakam Vitam Sha
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Matiraya. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Sri Vyasadeva, the author. Nasta Prayasabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatuttama Shloke Bhakti reading the Srimad Bhagavatam, and by rendering service unto the pure devotee. All that is troublesome within the heart, destroyed, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God, Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Om Surabhyay Namaha. Mukham karoti vasalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bandhe Sri Gurum Dinataranam. Yat kripa tamaham bandhe Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome to our Srimad Bhagavatam class, reading from Canto number 1, chapter 2. And today's text is 23.
Sattvam Rajas Tamah iti prakrite gunas tair yukta parah purusha eka ihasya dhatte stiti adaye hari virinchi hareti samnaha shreyamsi tatra khalu sattva tanor nrinam syuhu. Sattvam rajas tama iti prakriter gunasthair yukta para purusha eka ihasya dhatte sthityajaye hari virinchi hareti samnaha shreyamsi tatra kalu sattva tanor nrinam syuhu. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. I will read sentence by sentence, okay? Yeah. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with the three modes of material nature. Indirectly. Namely, passion, goodness, and ignorance. And just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu. और इन तीनों में एक मनुष्य है वो सबसे ज्यादा लाभ जो है वो विष्णु से प्राप्त कर सकता है. Vishnu, who is the form of the quality of goodness. विष्णु जो कि जिनकी पूजा सतोगुण में की जाती है, जो सतोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं. Purport. That Lord Sri Krishna, by his plenary parts, should be rendered devotional service, as explained above, is confirmed by this statement. भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की पूजा करनी चाहिए, वो इस वाक्य से सिद्ध होता है. Lord Sri Krishna and all his plenary parts are Vishnu Tattva. भगवान कृष्ण और उनके जितने भी अवतार हैं वो सभी विष्णु तत्व हैं. Or the lordship of goodness. या फिर कहें तो फिर सतोगुण के प्रधान देवता. From Sri Krishna, the next manifestation is Baladeva. भगवान श्री कृष्ण के जो सबसे पहले जो अवतार होते हैं वो बलदेव जी होते हैं. From Baladeva is Sankarshana. बलदेव जी से संकर्षण आते हैं. From Sankarshana is Narayana. संकर्षण से नारायण आते हैं. From Narayana there is the second Sankarshana. नारायण से दूसरे संकर्षण आते हैं. And from this Sankarshana the Vishnu Purusha avatars. उस संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार लेते हैं. The Vishnu, or the deity of the quality of goodness in the material world, is the Purusha avatar, known as Kshirodakshay Vishnu. तो वो जो विष्णु हैं, उनके बाद
क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक एक्सपेंशन होता है जो कि भौतिक संसार के ये प्राण है. Yes. So this Purusha avatar known as Kshirodakshay Vishnu is also Paramatma within everyone's heart. तो ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है यही सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है. Brahma is the deity of Rajas, passion. ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण के ये देवता हैं. And Shiva of ignorance. शिव जी जो हैं वो तमस के देवता हैं, प्रधान देवता हैं. It does not mean that Lord Shiva is in ignorance. इसका ये मतलब नहीं कि शिव जी खुद तमोगुण से बंधे हुए हैं. He is in charge of that mode. वो उस गुण के स्वामी हैं. They are the three departmental heads of the three qualities of this material world. ये जो तीन लोग हैं वो उन तीन विभागों के इस संसार भौतिक संसार को चलाती है. Creation is made possible by the goodness of Vishnu. Creation is made possible by the creation of Vishnu. I think there's. Do you have the same translation? No. Yeah, there is. I remember reading this verse sometime not too long ago, and this is sometimes there's a mistake like this somehow. What can you read what you have? Creation is made possible by Brahma's quality of passion and his endeavor. Yeah, creation is by Brahma. Yeah. So. Yeah, sometimes, rarely, but sometimes it happens. There is some somebody when translating or when typing or something. So this is, I think, was later corrected. So yes, creation is made possible by the mode of passion, and the mode of passion is Lord Brahma. Yeah. तो संसार का जो क्रिएशन है, जो उसकी उत्पत्ति है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है, जो कि रजोगुण के प्रधान देवता हैं. Someone should make a note of this particular irregularity, and I'm sure it probably has been brought up to the VBT, but okay, to continue here. And when it requires to be destroyed, Lord Shiva does it by the Tandava Nritya. जब उसको खत्म, जब भौतिक संसार को नष्ट करना होता है, तो फिर वो शिव जी के तांडव नृत्य के द्वारा होता है. The materialists and the foolish human beings worship Brahma and Shiva respectively. तो जो भौतिक मानसिकता के लोग हैं या जो मूर्ख लोग हैं, वो ब्रह्मा या शिव की पूजा करते हैं. This we should understand properly. Generally, people worship Lord Brahma and Lord Shiva for some material gain. सामान्यतः लोग शिव या ब्रह्मा की पूजा जो है किसी भौतिक लाभ के लिए ही करते हैं. But we can worship them to bless us, so that they can bless us to be devotees of Krishna. लेकिन हम उनकी पूजा अगर करते हैं तो फिर हमें इसलिए करनी चाहिए कि हम उनसे आशीर्वाद ले सकें और कृष्ण भक्ति में लग सकें. As we know, Lord Shiva is described as the topmost Vaishnava. क्योंकि शिव जी को जो है सबसे बड़ा वैष्णव माना जाता है. Yeah. But the pure transcendentalists worship the form of goodness, Vishnu. लेकिन जो
जो एक आध्यात्म पद पे जो बहुत बड़े निष्ठावान लोग हैं, वो लोग हमेशा ही विष्णु की पूजा करते हैं। And Vishnu, who appears in his various forms, unlimited forms. और विष्णु या फिर विष्णु के जितने भी अवतार हैं, Yeah. कृष्ण के अवतार, Vishnu is manifested by his millions and billions of integrated forms and separated forms. तो विष्णु के जो अवतार हैं जो भी संसार में, वो उनके अनेक असंख्य करोड़ों करोड़ों उनके जो एक्सपेंशन हैं, The integrated forms are called Godhead, and the separated forms are called the living entities or the jivas. तो भगवान के जो अ, भगवान के एक तो अवतार होते हैं, भगवान खुद ही जो है अपनी सारी शक्ति के स्वरूप में एक अवतार लेते हैं, और उनके जो जो जीवात्मा है वो भी भगवान का एक एक्सपेंशन है। Both the jivas and Godhead have their original spiritual forms. तो दोनों ही भगवान और जीव जो जो कि भगवान से ही आया है, दोनों का ही एक ओरिजिनल फॉर्म है, दोनों का ही एक वास्तविक रूप है भगवत धाम। Jivas are sometimes subjected to the control of material energy. लेकिन जो जीव है वो माया के विषय से वशीभूत हो जाया करता है। But the Vishnu forms are always controllers of this energy. लेकिन जो विष्णु के जो फॉर्म में है, जो विष्णु के जो साक्षात विष्णु या उनके अवतार हैं, वो कभी भी इस भौतिक माया के द्वारा वशीभूत नहीं होते। When Vishnu, the personality of Godhead, appears in the material world, he comes to deliver the conditioned living beings who are under the material energy. भगवान जब आते हैं तो वे इन जो जो बद्ध जीव हैं, जो माया से वशीभूत हैं, वो उनको अपने पास ले जाने के लिए, उनको माया से ऊपर उठाने के लिए आते हैं। Such living beings appear in the material world with intentions of being lords. तो ये जो जीवात्मा हैं जो भौतिक संसार में रह रहे हैं, वो यहाँ पे खुद स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। And thus they become entrapped by the three modes of nature. तो क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं, वो तीन गुणों के में ऐसे फंस के रह जाते हैं। As such, the living entities have to change their material coverings for undergoing different terms of imprisonment. तो ये जो जीवात्मा है, वो उनको अपने जो मटेरियल कवरिंग जो है, उनके जो अपना जो उनका जो शरीर है, उसको बार बार बदलना होता है। The prison house of the material world is created by Brahma under the instruction of the personality of Godhead. तो ये जो भौतिक संसार है, वो एक जेल के जैसा है, जिसमें जीवात्मा जो है शरीर बदल बदल के रहता है, और इसको बनाया ब्रह्मा जी ने है, लेकिन भगवान के कहने पे, विष्णु के कहने पे। And at the conclusion of a kalpa, the whole thing is destroyed by Shiva. तो एक कल्प का जब अंत होता है, ब्रह्मा का जब एक दिन खत्म होता है, तो उसके बाद ये भौतिक संसार नष्ट हो जाता है, और शिव जी के द्वारा। But as far as maintenance of the prison house is concerned, it is done by Vishnu. तो जहाँ तक तो ये बनाते ब्रह्मा जी हैं, इसको विध्वंस शिव जी करते हैं, लेकिन जब बात आती है इसको चलाने की, जो मेंटेनेंस की बात आती है, तो वो विष्णु करते हैं। As much as the state prison house is maintained by the state. इसी प्रकार से ऐसे शहरों में जेल होते हैं, तो उसका रखरखाव सरकार करती है। Anyone, therefore, who wishes to get out of this prison house of material existence, which is full of miseries, like repetition of birth, death, disease, and old age, must please Lord Vishnu for such liberation. तो जो भी इस
जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं, उनको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। Lord Vishnu is worshipped by devotional service only. भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उनकी भक्ति। And if anyone has to continue prison life in the material world, he may ask for relative facilities for temporary relief from the different gods like Shiva, Brahma, Indra, and Varuna. लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसको जो है इनकी भक्ति, इनकी पूजा में लग जाता है। No demigod, however, can release the imprisoned living being from the conditioned life of material existence. और इनमें से कोई भी देवता जो है, ब्रह्मा, शिव, वरुण इत्यादि में कोई भी देवता जो है वो एक जीवात्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छुड़ा सकता। And from Vishnu, the Godhead. तो एक जीवात्मा के ऊपर That I'll read again. I think maybe you can give back. Whoops. Okay, I guess not. So, yeah. Because long purport, so we may have forgotten the original text. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with the three modes. इसका जो है ट्रांसलेशन ये कहता है भगवान है विष्णु, जो भगवान विष्णु या भगवान जो है वो actually not okay, directly, indirectly. And just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Through the form of goodness. This is a very important verse that more clearly, not more clearly, it simply continues to explain what has already been before, that there is one supreme person known as that particular personality of Godhead of Krishna, mukti or liberation, material world to the conditioned souls. तो विष्णु ही एक जीवात्मा को, एक बद्ध जीव को भौतिक संसार से छुटकारा दिला सकते हैं। This is the subject matter of tattva. Tattva is a very important subject matter. ये तत्व का विषय है। तत्व जो है एक बड़ा ही important एक विषय। We are all very fortunate in that our acharyas are love to speak about tattva. To understand about tattva, otherwise we continue our prolonged existence in the prison house of the material. इस दुनिया में ये हैरानी की बात है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक जेल जैसी, एक कारागार जैसी जीवन जी रहे हैं। Yeah, vast majority of people, as we know, are totally unaware of their जेल में रह रहे हैं। To think about there must be something else. There must be some higher reality. The subject matter is so by themselves they cannot understand what is actually reality or tattva. जो कि समझ ही नहीं पाते, जो जिनको लगता है कि नहीं कुछ तो नहीं समझ सकते जब तक कि वो तत्व नहीं समझ। We were discussing, I think yesterday or the day before,
who is one of our foremost, based on Shastra, with the subject matter of Tattva. तो हमारे एक आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बहुत अच्छे से तत्व ज्ञान का विश्लेषण करके हमारे लिए जो है प्रस्तुत किया। And the first of the three tattvas, the first of three tattvas that explain the position of Krishna is known as Param Tattva. Krishna is Param Tattva. उन्होंने जो पहले तीन तत्वों का विश्लेषण किया है, उसमें परम तत्व का विश्लेषण करके बताया है कि भगवान कृष्ण जो है वो कैसे सर्वोपरि। And only one who reads Bhagavatam and literatures in connection with the Bhagavatam can understand why Krishna is known as or described as Param Tattva. तो जो लोग भागवतम या श्रीमद् भागवतम या उससे संबंधित जो दूसरे ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसके उस पर आधारित जो दूसरे ग्रंथ पढ़ते हैं, वही समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे परम तत्व हैं। It means that actually unless one comes in contact with Bhagavad Gita, and one will not know what is Tattva. तो जब तक कि कोई भागवतम या फिर भगवद गीता के संपर्क में नहीं आता, वो तत्वों को नहीं समझ सकता। So there are many verses, and of course the one that is especially quoted by Srila Jiva Goswami in the Bhagavatam is well known by most devotees. Vedanti tattvavidam tattvam yaj jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabjate. Srila Jiva Goswami refers to this verse as very realization of Godhead. तो हमारे आचार्य हुए जी गोस्वामी, उन्होंने ये श्लोक बोला, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान कृष्ण कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो आत्म जो भगवत साक्षात्कार का जो ज्ञान है, वो इन तीन लेवल्स पे एक साधक को या फिर जो साधक है उसको ब्रह्मन परमात्मा भगवान इन तीन स्तरों पे वो उस परम तत्व को, अद्वैत तत्व को समझ सकता है। Yeah. So just very quickly, in addition to Krishna being described as the Param Tattva, he is also described as Shaktiman, means all types of energies originate from that personality of Krishna. तो भगवान को पहले तो परम तत्व कहा गया है, और फिर उसके बाद भगवान को शक्तिमान भी कहा जाता है, क्योंकि आप संसार में जितनी भी शक्तियाँ देखते हैं, जो कुछ भी करने के लिए एक शक्ति लगती है, जितनी भी शक्ति देखते हैं, उन सब के स्रोत भगवान। Yes. And the third description given by Srila Bhakti is that Lord Krishna, and this is unique to Lord Krishna, he is described as Rasa Samudra, the ocean of transcendental mellows. Yeah. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान कृष्ण में एक और जो बात है, जो दूसरे उनके जो अवतार हैं विष्णु, उनमें भी नहीं है, वो है कि वो रस समुद्र हैं, वो रस के समुद्र हैं, वो जो, और ये देखने को नहीं मिलता किसी जीव में। Deep subject matters that that need to be properly understood. The more we clearly understand them, then we can devote our lives completely in the service of Krishna. जब हम इनको समझते हैं, ये जो इसमें नाम लिया महाराज जी ने, अगर हम इनको अच्छे से समझते हैं तो हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, भगवान के शरणागत हो सकते हैं। Sometimes people, they will criticize these Hare Krishna people, they are too fanatic. पहले लोग कहते थे कि ये जो हरे कृष्णा भक्त हैं वो बड़े ही फैनेटिक हैं। Yeah, they see only Krishna. How wonderful. वो हमेशा कृष्ण की बातें करते हैं, उन्हें हर जगह कृष्ण दिखते हैं। Yeah, actually someone was criticizing, yes, someone was analyzing Srila Prabhupada's translation of the Bhagavad Gita.
comparing it to, I think, some Mayavadi translation. Obviously, there's a big difference. एक बार एक सज्जन थे, वो प्रभुपाद की गीता का विश्लेषण किसी एक मायावादी टीकाकार की गीता के साथ रख के कर, उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला. Actually, the first Bhagavad Gita, I remember before becoming a devotee, I had come to know about Bhagavad Gita, and the first edition of Bhagavad Gita was not Prabhupada's edition, was what they call a small edition, they call Penguin edition. Penguin maybe is not known. It's a Mayavadi kind of translation. महाराज जी स्वयं जब पहली बार इनका गीता जब इन्होंने पढ़ी तो फिर उन्होंने प्रभुपाद जी की कोई पेंगुइन एडिशन है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी That Penguin edition of the Bhagavad Gita many times, and I had no idea who is Krishna. महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने पेंगुइन एडिशन जो थी, पेंगुइन पब्लिकेशन की जो भगवद गीता के ऊपर टीका थी उसको पढ़े और कई बार. Prabhupada relates that one day one American lady came to see me and she asked me, Swamiji, can you prescribe or recommend a good translation of the Bhagavad Gita for me? प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो एक महिला आई वहाँ पे और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि आप कोई एक अच्छी गीता की टीका का मुझको बता सकते हैं क्या? So at that time in America, and there must have been maybe something like over 600 or 700 translations of the Bhagavad Gita. तो उस समय में अमेरिका में ही 600 से 700 गीता के जो संस्करण थे वो थे. So, you know, when you have 700 translations of the same book, naturally it's a little confusing which one to read. You know? किसी भी पुस्तक के 600 से 700 उसकी जो है संस्करण हैं आपके सामने, तो फिर एक दुविधा तो सबके किसी के भी मन में आ जाएगी कि कौन सा वाला पढ़ें. So Srila Prabhupada was very straightforward, was very honest, and he replied to this lady that as far as I know, as far as I have seen, I cannot recommend any translation of the Bhagavad Gita because they are not give the real understanding of प्रभुपाद जी ने बड़े ही सहजता से उत्तर दिया कि जहाँ तक गीता पढ़ने की बात है तो इन 600-700 जितने भी संस्करण हैं इनमें से मैं एक का भी आपको नहीं कह सकता कि आप इसको पढ़ें, क्योंकि जितने मैंने देखे हैं वो सभी जो हैं थीम पे बात नहीं करते. So after reading my Penguin edition of the Bible, sometime I was fortunate, otherwise I would not be sitting here, I was fortunate to get Prabhupada's Bhagavad Gita. महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने पेंगुइन पब्लिकेशन की भगवद गीता जो पढ़ी थी उसके बाद उनको कृपा मिली और उनके हाथ में प्रभुपाद जी की गीता आई. अगर वो नहीं आई होती तो वो यहाँ पे नहीं बैठे होते. I think I'm not the only one who would not be sitting here if we all didn't come in contact with the real Bhagavad Gita. महाराज जी कह रहे हैं ऐसा नहीं कि बस वही नहीं यहाँ पर बैठे होते, यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं या लगभग सभी लोग जो बैठे हुए हैं वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के ही आए हैं या फिर जिसने पढ़ा था उसको वो आपको लेकर के. So this Penguin edition was very small, because the person had nothing to say. So it was very small. Then when I got Prabhupada's book, it was like, like a brick, right? A big book. So I that by Prabhupada's book, and that's before I became a devotee. And I was thinking, boy, every page is so many times Krishna is there. Krishna in every purport, many times. महाराज जी कह रहे हैं कि जो पेंगुइन एडिशन की जो गीता थी वो बहुत पतली सी थी, शायद उनके लेखक को कुछ ज्यादा था ही नहीं कहने को, लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद की गीता हाथ में ली तो एकदम वो ईंटें जैसी लगती थी. तो फिर उनको देख करके फिर मोटी की खोल कर तो हर पन्ने पे कहीं न कहीं
लिखा हुआ था, तो इनको लगा कि कौन है ये। So it means that actually, it means that anyone who opens Prabhupada's Bhagavad Gita cannot cannot but come out by being impressed by the name Krishna, because it is repeated again and again. तो प्रभुपाद जी की जो गीता है उसमें कृष्ण का नाम इतनी बार दिया गया है कि ये किसी के भी दिमाग में बैठ जाता है कि कौन है ये, किसने क्या, कौन है, क्या है। So this verse this morning and so many other verses from the Bhagavatam and other Vedic literatures, this is the specialty, the special, we can say, contribution of the Goswamis in Vrindavan. They have brought out, and especially amongst all of the Goswamis, Srila Jiva Goswami has especially emphasized this and explained in so many wonderful ways the unique qualities and the unique position of उन्होंने बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण के संबंधित जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है उसको बहुत अच्छे। And just one last point, which is many points are being nicely explained, of course, in the purport. One of them, most important for all of us, is that the jiva, we are all that eternal part and parcel of the Supreme Lord. So the jiva, like the Supreme Lord himself, Krishna, the jiva and the Supreme Lord both have an eternal personal form. And it is that unveiling of our original identity as personal living entities having a personal form that can bring us to again reconnect with Krishna. जो जीव, और सबसे अंतिम में प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि जो महाराज जी बता रहे हैं कि जो जीव है और भगवान है दोनों एक व्यक्ति हैं, और जो हमारा जो साधना है वो है कि हम उस व्यक्ति के साथ कैसे संबंध स्थापित कर सकें। Anyway, many more things could be brought out, but if there's any question or comment, because तो इस विषय के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, जितने भी कहेंगे, और किसी को अगर इसमें कुछ टिप्पणी करनी है या कोई प्रश्न है तो वो कह सकता है। How many devotees have read? Yeah, I know your hand is coming. 1 second. How many devotees have read this very important book called Dasamula Tattva? Raise your hand. How many know about Dasamula Tattva? It's not a very big book, small book, eh? It's a small Dasamula. I highly recommend to all the devotees. It's in the folio. Somebody maybe can just copy it and make it available. कितने लोगों ने यहाँ पे 10 मूल तत्व नाम की पुस्तक को पढ़ा है? अपने हाथ उठाइए। Not many hands. Just और कितने लोगों ने सुना है इसका नाम? okay. तो इसलिए फोलियो में है, शायद आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको जरा अपने संज्ञान में लें। So many books are in the library. That should be one of the books. हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये भी एक होनी चाहिए। Yes. Okay, if I understand, just for so that our English audience can also, why why is maintenance so difficult? Why is Vishnu, that personality, taking charge of maintenance? Is it? Okay, so you're asking what
what exactly is maintenance? Okay, I translate. प्रश्न है कि भगवान विष्णु जो हैं वो सतोगुण के प्रधान अधिष्ठाता देवता हैं, तो उसमें मेंटेनेंस जो है, जो उसमें ऐसी क्या बात है कि विष्णु को खुद आना पड़ता है मेंटेनेंस करने के लिए, और मेंटेनेंस क्या है और उनको ही क्यों आना पड़ता है, सतोगुण से कैसे संबंधित है? Small example. If somebody builds a house, normally it will take a relative duration of the house, the duration of time the house will be there. In other words, it takes a very short time to build something, and also to break something or to destroy also takes a short time. But for keeping this building, let's say, house that one is building, there's daily maintenance that is needed. And there are so many, so similarly, like this creation, to keep this whole creation functioning smoothly, because it's a very involved and intricate matter, the material creation. Therefore, it requires someone like Vishnu, who is completely transcendental to this material creation because he has created it, and therefore, we are talking about millions and billions of universes, unlimited conditioned souls in the material world, and in other words, to keep all of this functioning and running smoothly, that is done by Vishnu. Every single moment of the day when we are doing something, if we're not Krishna conscious, fully Krishna conscious, we're getting good or bad reaction, karma. Keeping track of all the karma. So many things involved actually in maintaining this material universe. I mean, one could go on and on and on describing. This is the responsibility of Vishnu, not of Brahma, not of Shiva. So in other words, when we look at what they do compared to what Krishna does through his Vishnu incarnations, then therefore Vishnu is that personality because he's totally unaffected. Whereas Brahma and Shiva, they actually come in contact with these modes also. Anyways, yeah. Sorry, that's a little bit long. तो पहले तो प्रश्न था कि मेंटेनेंस के लिए विष्णु ही क्यों आते हैं, सतोगुण के देवता क्यों हैं वो, तो इस प्रकार से प्रश्न था। तो उसका उत्तर महाराज जी ने दिया कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए और किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए काफ़ी कम समय लगता है, लेकिन वो जो जिस काल अवधि में वो जो वस्तु बनाई गई है, उसको चलाने जो है वो उसको चलाने के लिए जो है विष्णु खुद आते हैं। स्पेशली अगर इस संसार की बात करें तो उसको बनाने में भी कम समय लगता है, ध्वंस करने में भी कम समय लगता है, लेकिन ये जो असंख्य करोड़ों ब्रह्मांड है उसको चलाने के लिए विष्णु ही आते हैं, क्योंकि इसमें सत्वगुण लगता है चलाने में। जबकि शिव और ब्रह्मा जो हैं वो रजस और तमस से कभी कभी उसके संपर्क में, वो खुद भी उसके संपर्क में आ जाते हैं, विष्णु उनके संपर्क में नहीं आते। Or just very quickly, another example which may help to understand more clearly. It's like to make something and to break something is very easy. But to keep something, to maintain something, the example is like marriage. You're in saffron color, you don't understand that. But to get married, people get married nowadays. Nowadays people don't even get married. So getting married and getting divorced is very easy and common. But how many people are actually able to maintain their married life? Actually, very few in Kali Yuga. तो किसी भी चीज़ को बनाने और खत्म करने में बहुत कम समय लगता है,
बनाने और ख़त्म करने में बहुत कम समय लगता है, उसको जो मेंटेन करना है, जो जो उसको बचा के रखना है, बना के रखना है, वो सबसे जो है इसका कठिन कार्य होता है। जिस प्रकार से शादी करना भी जो है तुरंत ही, उसको अगर तलाक लेना है तो वो भी तुरंत ही हो सकता है, लेकिन अगर उस शादी को चलाना है, उसको मेंटेन करना है, तो वो जो है सबसे कठिन हिस्सा होता है। To come to a Bhagavatam class and to leave Bhagavatam class is very easy, but to stay in the Bhagavatam class to maintain consciousness. भागवतम कक्षा में आना और यहाँ से चले जाना दोनों ही आसान है, लेकिन यहाँ पे सतर्क रह के बैठना वो जो है एक कठिन कार्य है, वो सतत होता था। To maintain concentration. Time duration. You're saying that the time duration between creation and destruction is, yeah, that's a factor. It means like destruction, again, takes place within a very short time compared to the duration of the creation. Yeah, that's another factor. प्रश्न था कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो काल अवधि है, क्या हाँ 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 तो प्रश्न था कि क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जिस काल अवधि जो किसी भी चीज़ को अगर आप मेंटेन करते हैं, उसको बचा के रखते हैं, तो उसमें जो काल अवधि लगती है, क्या उतनी काल अवधि सिर्फ विष्णु ही रख सकते हैं, ब्रह्मा शिव नहीं रख सकते? महाराज जी ने कहा कि वो ऐसा ही है। So it means that Vishnu has the toughest job, तो विष्णु का जो कार्य है वो सबसे कठिन, most responsible, and yeah, this is being explained here. Therefore, we should worship only Vishnu, and only Vishnu can award liberation from the material world through the only process of bhakti or devotional service. Yeah. तो इसी वजह से, क्योंकि विष्णु का कार्य सबसे कठिन है, हमें विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की नहीं करनी चाहिए। Now it's already past time. I'll answer your question after the class. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Gaura Premanande. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.